वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आम क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर बुक रो चैप्टर 7 नाउन क्लजेस एंड रिलेटिव क्लजेस रो एक्टिविटी 1 एंड 2 करवा। सो फर्स्ट एक्टिविटी 1 करबा पूर्व आमको फ्रेज क्लज आउ सेंटेंस मध्य अंतर जानिबा निहाती आवश्यक। सो फटाफट फ्रेज क्लज आउ सेंटेंस मध्य डिफरेंस हम जानिबा तापर एक्टिविटी 1 बहुत इजी लागिवो। सो देखो तो ये देखो दीटा सेंटेंस एग्जांपल अछि 1 डू यू नो व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन अराइव्स। Next, everyone in the family went to there, but he stayed at home. Phrase, clause, and sentence. Phrase is a group of words. Clause is also a group of words. Sentence is also a group of words. So phrase, clause, sentence, a group of words, right? Phrase रो no subject verb combination. एटी subject verb combination न थाए. एटी subject verb combination थाए. एटी subject verb combination रही थाए. आमने subject predicate phrase रो न थाए. Clause रो subject predicate combination थाए. Our sentence रो subject predicate combination थाए, right? Phrase is a part of a sentence. Phrase is a part of a sentence. Clause is also a part of a sentence, right? Phrase and clause are parts of sentence. Phrase और clause sentence रो गोटे part. Next point is very important. It makes sense but not complete. Phrase गोटे sense making करे but not complete sense, right? Clause it may or may not मेक कम्प्लीट सेन्स। एटा कम्प्लीट सेन्स बुझाई थाए बेले बेले आ बेले बेले बुझाई न थाए, राइट? सेंटेंस होची ऑलवेज मेक्स ए कम्प्लीट सेन्स, राइट? इट मेक्स कम्प्लीट सेन्स। सो हम एग्जांपल देखा बर्तमान एटी देखो डू यू नो व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन अराइव्स। एटा हम गोटे सेंटेंस कहि परिबा, तेनो एटा गोटे सेंटेंस रो एग्जांपल हे परिबो। एटी लिखा है देखो द नेक्स्ट ट्रेन। एटी द नेक्स्ट ट्रेन ता होची गोटे फ्रेज हबो, राइट? द नेक्स्ट ट्रेन गोटे फ्रेज हे परिबो। इट कंटेन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट एठी देखो सब्जेक्ट भार बा सब्जेक्ट प्रेडिकेट किछि कॉम्बिनेशन नाही। एटा गोटे मु खाली कहबी द नेक्स्ट ट्रेन कहले खाली एटा गोटे कंप्लीट सेंस बुझो नाही। तो सेंस बुझोची बट कंप्लीट सेंस बुझो नाही, तेणु एटा को हमें फ्रेज कहबा। सेपरी सेकंड सेंटेंस रे एवरीवन इन द फैमिली होची गोटे फ्रेज हबो। इन द फैमिली एटा कंप्लीट सेंस बुझो नाही कि एठी सब्जेक्ट भार बा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन नाही। सेपरी एट होम मध्य हे परिबो फ्रेज। तापर देखो क्लज एठी परिबा हमर डू यू नो एठी सब्जेक्ट भार्ब रोची, तेणु डू यू नो गोटे क्लज हे परिबो। व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन अराइव्स एटा भी गोटे क्लज हबो, राइट? पूरा डू यू नो व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन अराइव्स एटा होची गोटे सेंटेंस। सो एठी हम देखले दीटा क्लज डू यू नो एटा होची मेन क्लज हे परिबो। व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन अराइव्स एटा होची सबऑर्डिनेट क्लज, राइट? आश्रित वाक्य। डू यू नो मेन क्लज मीन्स जोटा कि मुख्य मेन क्लज, राइट? जोटा कि इंडिपेंडेंट क्लज। व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन अराइव्स एटा होची डिपेंडेंट क्लज। या सहित डू यू नो ऊपर ए सेंटेंस ए क्लजटा डिपेंड करची। व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन अराइव्स डिपेंड्स ऑन डू यू नो, राइट? देन एवरीवन इन द फैमिली वेंट टू देयर एटा हला होची मेन क्लज। बट ही स्टेड एट होम एटा होची एटा कोऑर्डिनेट क्लज कहबा। बट लगे कि दिरा को जॉइन कराई छी सेतमे एटा कोऑर्डिनेट क्लज कहि परिबा, राइट? कोऑर्डिनेट क्लज। सो दिटा क्लज एवरीवन इन द फैमिली वेंट देयर आउटे बट ही स्टेड एट होम सेटा भी गोटे क्लज, राइट? आ दिटा जाको गोटे सेंटेंस। सो वर्तमान हमें फ्रेज क्लज और सेंटेंस विषय जानिले। एबे हमें फ्रेज क्लज और सेंटेंस चिनि परिबा, राइट? Mention whether the following expressions are phrases or clauses or sentences. So phrase पे हमें P लिखिबा, clause पे हमें C लिखिबा और sentence पे S लिखिबा। Where have you been? ये गोटे कंप्लीट सेंस बुझुची, तेणु एटा गोटे सेंटेंस हबो, राइट? तो एटा को हमें लिखिबा S सेंटेंस। देन Humpty Dumpty sat on a wall। एटा भी गोटे कंप्लीट सेंस बुझुची, यार सब्जेक्ट प्रेडिकेट अछि, तेणु एटा गोटे सेंटेंस हबो। नेक्स्ट लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो एटा कंप्लीट सेंस बुझो नहीं, तेणु एटा गोटे फ्रेज हबो। फ्रेज यार सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन मध्य नहीं, तेणु एटा फ्रेज हबो। हु पुल्ड हार आउट एटा कंप्लीट सेंस बुझुची एवं यार सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन रोची, तेणु एटा होची सेंटेंस हबो। सो देन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। सो एटा जिल केम टम्बलिंग आफ्टर, तेणु एटी सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन रोची, ता पूर्व एंड अछि, तेणु एटा होची कोऑर्डिनेट क्लज हबो। कोऑर्डिनेट क्लज एटा होची
आउर किछि ता पूर्व रही गला वाला जाना पड़छि तेणु कंप्लीट सेंस बुझु नै एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर एटा होछि वाक्यर गोटे पार्ट एवं एटा गोटे क्लज राइट ता पूर्व आ किछि रहि जाइछि देन अंडर द क्वीन्स चेयर तो एटी सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन नै तेणु एटा हो फ्रेज राइट देन ऑल द किंग्स हॉर्सेस एटा भी गोटे फ्रेज ऑफ द हिल बुझी होछि एटा फ्रेज ए नाइस फेयर स्टोरी ये भी गोटे फ्रेज जैक फेल डाउन एटी भार्ब रोची सब्जेक्ट रोची कंप्लीट सेंस बुझौची जैक तले पड़ीगला तेणु एटा होची सेंटेंस हबो ए स्टिच इन टाइम एटा होची गोटे फ्रेज राइट द क्लॉक स्ट्रक वन स्ट्रक होची भार्ब रोची माने घंटा रे गोटे बाजिची तो एटा कंप्लीट सेंस बुझौची तेणु एटा होची सेंटेंस पुसी इन द वेल एटा होची फ्रेज एटी सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन नाही आफ्टर सीलिंग द लेटर एटा होची सीलिंग भार्ब रोची आफ्टर सीलिंग द लेटर ता पूर्व आफ्टर सीलिंग द लेटर ता परे किछि हे परिबो कंप्लीट सेंस हबो बा ता पूर्व किछि हे कि आफ्टर सीलिंग द लेटर मध्ये हे परिबो सपोज ही पोस्टेड आफ्टर सीलिंग द लेटर तो एटा कंप्लीट हबो सेटा गोटे सेंटेंस हबो बट आफ्टर सीलिंग द लेटर एटा गोटे क्लॉज हबो राइट टू फेच ए पेल ऑफ वाटर एटा होची सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन रो नाही तेणु एटा होची गोटे फ्रेज हबो राइट देन आम करबा एक्टिविटी 2 ड्रॉ डबल लाइन्स अंडर द मेन क्लजेस एंड सिंगल लाइन्स अंडर द सबऑर्डिनेट क्लजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इग्नोर कोऑर्डिनेट क्लजेस मु किंतु मेन क्लज को अंडरलाइन करछि आ सबऑर्डिनेट क्लज आ कोऑर्डिनेट क्लज कहि दोछि सेटा को मार्क करो राइट तो सबऑर्डिनेट क्लज कोऑर्डिनेट क्लज आ मेन क्लज जानिया पई ए एग्जांपल देखो तापर सब कर परिबो आई कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ सॉरी आई एम I cannot express how sorry I am. I cannot express एटा होची मेन क्लज how sorry I am एटा होची सबऑर्डिनेट क्लज सबऑर्डिनेट क्लज कोन जोटा कि मेन क्लज ऊपर डिपेंड करथुबो मेन क्लज ऊपर जे डिपेंड करथुबो से होची सबऑर्डिनेट क्लज बा डिपेंडेंट क्लज राइट मेन क्लज को कोनती इंडिपेंडेंट क्लज ये नहले मध्य ये कंप्लीट सेंस बुझेबो तेनो एटा होची ये का ऊपर डिपेंड करू नाही तेनो I cannot express होची मेन क्लज राइट किंतु कोऑर्डिनेट क्लज कोन कोऑर्डिनेट क्लज होची ए एग्जांपल देखो जैक फेल डाउन एंड ही ब्रोक हिज क्राउन एटी दीटा जाक इंडिपेंडेंट क्लज हे पारिबो हम जदि भांगी देबा सेंटेंस को जैक फेल डाउन ही ब्रोक हिज क्राउन तो जैक फेल डाउन मेन क्लज हबो इंडिपेंडेंट क्लज हबो ही ब्रोक हिज क्राउन आउट सेंटेंस जदि करा जाए ये भी गोटे मेन क्लज हबो इंडिपेंडेंट क्लज हबो राइट किंतु एटी एंड लगा है कि ये दीटा सेंटेंस को जॉइन हेछि तनो जेतेबेले गोटे कंजक्शन लगे कि हम दीटा मेन क्लज को दीटा डिपेंडेंट क्लज को हमें जॉइन करवा सेतेबेले होछि एटा हबो एंड ही ब्रोक हिज क्राउन हबो कोऑर्डिनेट क्लज राइट तो गोटे कोऑर्डिनेट बा गोटे कंजक्शन हमें लगे कि एंड एठी हमें ताको जॉइन कले तेनु एटा हबो होछि कोऑर्डिनेट क्लज राइट सो फर्स्ट आई कैनॉट एक्सप्रेस हाउ सॉरी आई एम आई कैनॉट एक्सप्रेस होछि एठी मेन क्लज हाउ सॉरी आई एम होछि सबऑर्डिनेट क्लज राइट जैक फेल डाउन एंड ही ब्रोक हिज क्राउन जैक फेल डाउन होची मेन क्लज एंड ही ब्रोक हिज क्राउन हबो कोऑर्डिनेट क्लज नॉट सबऑर्डिनेट क्लज कोऑर्डिनेट क्लज हबो एटी एंड कोऑर्डिनेट तर रहिची बा एंड कंजक्शन हमर लागि जेटी राइट एंड ही ब्रोक हिज क्राउन एटा हबो कोऑर्डिनेट क्लज देन ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द वर्क इज डन all depends on how the work is done all depends habo main clause how the work is done eta habo subordinate clause then it is feared that he will not help us it is feared habo main clause that he will not help us seta hochi subordinate clause means main clause upare joda depend karutubo right eta hochi dependent clause madhya kohti main clause hochi independent clause simply it is clear that he is honest it is clear about main clause that he is honest subordinate clause I asked the boy how old he was I asked the boy main clause how old he was subordinate clause then the point is that he was absolutely honest the point is main clause that he was absolutely honest so that was subordinate clause when his father will return is uncertain when his father will return is uncertain तो is uncertain एटा हबो मेन क्लॉज एटा होची सब हमर वर्ब रोची is uncertain when his father will return एटा होची सबऑर्डिनेट क्लॉज when his father will return डिपेंड करछि या ऊपर तेनो एटा हला सबऑर्डिनेट क्लॉज
his great fear is that he may not succeed. His great fear is that he may not succeed. So his great fear is এটা হচ্ছে মেন ক্লজ, that he may not succeed subordinate clause. Then Humpty Dumpty sat on a wall and he had a great fall. Humpty Dumpty sat on a wall, এটা হব মেন ক্লজ, and he had a great fall. তো এটি and conjunction লাগিছি, তেণু and he had a great fall হব কোঅর্ডিনেট ক্লজ। এটা সবঅর্ডিনেট ক্লজ নুহে, এটা কোঅর্ডিনেট ক্লজ হব, কোঅর্ডিনেটর এন্ড লাগিছি বা কনজংশন এন্ড লাগিছি, এবং দুইটাকে আমি যদি ভাঙি দেবা ইয়ে দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হব। এটি হব হম্পটি ডম্পটি সেট অন এ ওয়াল, এটা হয়ে পারে হি হ্যাড এ গ্রেট ফল, দুইটা যাক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হব। তেণু এন্ড কোঅর্ডিনেটর লগাইকি দুইটা সেন্টেন্স কু জয়েন କରାଯାଇଛି, তেণু এটি হব এন্ড হি হ্যাড এ গ্রেট ফল কোঅর্ডিনেট ক্লজ, রাইট। দেন a proverb is one man's wit but it is all man's wisdom. A proverb is one man's wit, এটা হব মেন ক্লজ, but it is all man's wisdom, এটি but কনজাংশন লগাইছি, তেণু but it is all man's wisdom এটা হব কোঅর্ডিনেট ক্লজ, not subordinate clause. Then there is many a sleep before the cup is taken to the lip. There is many a sleep before the cup is taken to the lip. So before the cup is taken to the lip এটা subordinate clause. There is many a sleep এটা হব main clause, right? Then do you know when the next train arrives? Do you know when the next train arrives? Do you know এটা হব main clause. When the next train arrives subordinate clause. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. এটা টিকে বলা প্রকার হব that glitters. That glitters এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করছি all is not gold উপরে, তেমন all is not gold এটা হব হচ্ছে মেন ক্লজ, that glitters এটা হব subordinate clause, right? All is not gold main clause. Then he says that his mother is ill. He says that his mother is ill. He says about main clause, that his mother is ill subordinate clause. He told me that he was ready. He told me that he was ready. He told me habo main clause, that he was ready habo subordinate clause. What he says may be true. What he says may be true. What he says se jaha kohuchi may be true. So eti what he says habo subordinate clause, may be true habo main clause. May what he says depend korchi may be true, may be true. So may be true habo main clause, right? So he waved his hand and bored the bus. He waved his hand and bored the bus. He waved his hand এটা হব মেন ক্লজ, and bored এটি and conjunction লাগিছি, তেণু and bored the bus এটা হব কোঅর্ডিনেট ক্লজ, রাইট?